శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియ కాంతాయ కళ్యాణం నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे
जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం सौभाग्यं सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षणां सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. हरि ओम नमस्तते नमस्तते सस्पतगे नमस्तखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रतसभां मे गोपागां ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमागरुपासतां सर्वेभ्यः जगत्प्रभुं देवदेवं अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुष सततोत्तिगः. பக்தர்களே, இது விஷ்ணு சகஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம். அந்த புருஷோத்தமனே இதோ இந்த திருவேங்கட மலை மீது எழுந்தருளிருக்கும் நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமான். அந்த எம்பெருமானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு அவரது உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து எம்பெருமானின் திருவருளை பெற பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி TK லக்ஷ்மி கிருஷ்ண சுவாமி. ஆரம்பத்தில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து இப்போது கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் இவை இப்போது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வைகானச ஆகமப்படி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மந்திர ஒலிகளை கேட்போம், நிகழ்வுகளை தரிசிப்போம். விஸ்வக்சேனர் भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्
ఓం భూర్భువస్వరం శ్రీ భగవదాత్మగా భగవత్కైంకర్యరూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీగపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శేషాచలక్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమాన స్వామినः వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహ వాచనం కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమా అవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ కరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారాసు సప్తశుజమానశేషు సరస్సరిత్సు పరిపూరితేషు అబోధగహ్నన్ ప్రతిపాదగిష్యే గృణోమి దత్తాగం శుశురకం శుశర్మాం ఇదమాపశివా శుభతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమాః పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతా అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ఓం ఏతే శతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞగా పాశా వితతాః పురుత్రా तेभ्यो न इंद्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वर्णमावाहयामि प्रतेजसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वागमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्ठपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानभागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जिगामावाहयामि सूत्रवती जिगासमेत श्रीविश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विमन्यवो चाकृभागं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं त्रिविनोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सते त्रिविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टभागं सस्तनोभिर्विगशेम देवशतं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्त्यदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता कुर्गन्तोः अतिथिर्त्योरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्चातमतिथिर्चरित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीतोपविगुषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूर्भुवस्वरं श्री भगवदात्मया भगवत्कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रभवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रभवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रभवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో ప్రవంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో ప్రవంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో ప్రవంతో కర్మణే స్వస్తి రుధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసత్యాం మిత్రం దేవం మిత్రధేగన్నోస్తు అనురాధాన్ హవిషా వృద్ధగन्तः శతం జీవేమ శరదः సవీరాः ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో ప్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో ప్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో ప్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్ఠామయో భవస్థాన ఊర్జేతధాతనాం మహేరణాగచక్షుషే యోవశ్రవతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామభోగస్సక్షగా గజన్మథాం ఆపోదనగథాతనః ఓం పవమానస్సువర్చనః పవిత్రేణ విచరుషునిః యప్పోతా సపునాతు మాం పునంతు మా దేవజనాః పునంతు మనబోధయాం పునంతు విశ్వ ఆగవః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహి మాం శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే క్రత్వా క్రతుగం వృణో యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితతమంతరాం బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉపాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవి పునతి దేవ్యాగా ఆతే యస్యై భక్వీస్తనవో వీతపృష్ఠాః తగామదంతః సధమాత్యేషు వయగ్గస్యామపతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతు వాతః ప్రాణేనే శ్రోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పగసాపయోభిః ఋతావరీ యజ్ఞగే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్ఠైర్దేవమన్నభిः అగ్నే దక్షైः పునాहि మాం येन దేవా అపునతాం येनापो దివ్యం కచః తేన దివ్యేన బ్రహ్మణాం ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే యః పావమానీరథ్యేతి ఋషభిः సంహృతకం రసం తస్మై సరస్వతీ దుహే క్షీరకం సర్పిర్మధూదకం పావమానీ స్వస్తిగనీః సుదుఘాహి కృతశ్చుతః ఋషభిः సంహృతో రసః బ్రాహ్మణేష్వమృతగం హితం येन దేవాః పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సుధా తేన సహస్రధారేణ పావమాన్యః పునంతు మాం ప్రాజాపత్యం పవిత్రం శృతోత్యామకం హిరణ్మయో తేన బ్రహ్మవిదోమగం పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సునీతి సహ మా పునాతో సోమస్వస్త్యా వరుణస్వమీచ్ఛ్గా యమో రాజా ప్రపుణాభిపునాతు మాం జాతవేదామోర్జగంత్యా పునాతో తచ్చయ్యో రావృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతకే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఊర్ధ్వం జగాదభేషజం షన్నో అస్తత్విపదే శంచతుష్పదే ఓం శాంతిః 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 ప్రాచ్యాం దిశు దేవార్పితో మార్చగంతాం దక్షిణాగాం దిశమాసాపితరో మార్చగంతాం ప్రతీచ్యాం దిశ గృహా పశవో మార్చగంతాముదీచ్యాం దిష్కాప ఓషధయో వనస్పతయో మార్చగంతామూర్ధ్వాగాం దిశ యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మార్చగంతామధోధరాధరైర్నాగేభ్యో మార్చగంతాం అనోరణీయాన్ మహతో మహీయానాత్మా గుహాయాం నిహితోస్కదంతోః తమక్రతుం పశ్యతి వీతశోకో ధాతు ప్రసాదాన్ మహిమానమీశం సప్త ప్రాణాః ప్రభవంతి తస్మాత్ సప్తార్చిషः సమిధः సప్త జిహ్వాः సప్త ఇమే లోకా ఏషు చరంతి ప్రాణా గుహాశయాం నిహితాः సప్త సప్త అతः సముద్రాగిరయశ్చ సర్వేస్మాత్ స్యంధంతే సింధవः సర్వరూపాः అతశ్చ విశ్వా ఓషధయో రసాశ్చ येनैष భూతస్తిష్ఠత్యంతరాత్మా వరుణాగ్రమః విశ్వక్సేనాగ్రమః పునః పాత్యర్ఘ్యాతమనం సమర్పయామి వరుణాగ్రమః విశ్వక్సేనాగ్రమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి యథాసుఖమిథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థం క్షేమాగ పునరాగమనాగ చ புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் இவை மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாடும் நகரம் நன்கறிய நமோ நாராயணா என்று
பாடு மனமுறை பத்தருள்ளீர் வந்து பல்லாண்டு கூறுமினே என்று பெரியாழ்வார் தனது திருமொழியில் எம்பெருமானின் 1000 திருநாமங்களில் ஒன்றான நாராயணா என்கிற திருநாமத்தை உயர்த்தி சொல்லியிருக்கிறார். அவரது திருமகளான ஆண்டாள் பிராட்டியும் தனது திருப்பாவை பாசுரங்களில் முதல் பாசுரமான மார்கழி திங்கள் என்று தொடங்கும் அந்த பாசுரத்தின் கடைசி வரியில் நாராயணனே நமக்கு பறை தருவான் என்று சொல்லி நமக்கு முக்தியை தரும் மந்திரம் நாராயண மந்திரமே என்கிறார். ஓம் நமோ நாராயணாய என்பதே திருமந்திரம். அசுரக் குழந்தையான பிரகலாதனுக்கும் அரச குழந்தையான துருவனுக்கும் இந்த மூல மந்திரத்தை நாரத மகரிஷி போதித்ததாக புராணங்கள் சொல்கின்றன. பக்தர்களே, பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்ட அந்த பரமனே நாராயணன். அவரது திருநாமம் உதட்டில் ஒலிக்க அவரது திருவுருவத்தை மனதில் நிறைத்து கொண்டு இன்றைய நாள் பொன்னாள் ஆகட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்வோம். காவல் தெய்வமாய் நிற்கும் இந்த திருமலையில் நின்ற கோலத்தில் தரிசனம் தரும் அந்த எம்பெருமானின் கருணை கண்கள் நம்மேல் அருளை பொழியட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்வோம். பக்தர்களே, அந்த மந்திரத்தை, நாராயண மந்திரத்தை மனதில் தியானித்துக் கொண்டே இதோ இந்த அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்தை நாம் தரிசிப்போம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம். எப்போதும் திருக்கல்யாணத்தில் முதலாக நடைபெறுவது இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம்தான். அதோ பாலிகைகள் எனப்படும் அந்த நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து புஷ்பங்களை அர்ச்சித்து துளசியால் ஆராதித்து பின்பு மந்திரங்களால் தேவதைகளை ஆவாகனம் பண்ணுவதே இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். இந்த பாலிகைகள் செழித்து வளர்வதைப் போல தம்பதிகளின் இல்வாழ்வும் செழிக்க வேண்டும் என்று அந்த தேவதைகள் அனைவரையும் வேண்டிக் கொள்வதாக ஐதீகம். பக்தர்களே, நமது வேண்டுகோளுக்காக நமது இந்த திருவேங்கடத்தை எம்பெருமான் நித்திய கல்யாணம் செய்து கொள்கிறார் அல்லவா? அவரது திருக்கல்யாணத்தில் எந்த ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயங்களும் நமது கல்யாணத்தில் நடைபெறுவது போலவே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. இதோ இப்போது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் முடிந்து அடுத்து இனி எம்பெருமானுக்கும் தேவிமார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கப் போகும் ரட்சைகளுக்கு இப்போது பூஜை. வைகானச ஆகமப்படி ஆதிசேஷனையே ஆவாகனம் பண்ணுவதாக ஐதீகம். ஆகவே இப்போது அந்த மந்திர ஒலிகளை நாம் கேட்க உள்ளோம். ஆதிசேஷன் எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவர். எம்பெருமானோடு எப்போதும் இருந்து கொண்டு வைவாஹிகோத்சவகர்மாங்கம் ரக்ஷா சூத்திரதாரணார்த்தம் ரக்ஷாபந்தன பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே. ஓம் சுச்சி வோஹவ்யாமிருத சுச்சீனாகம் சுச்சிகும்பினோம் யத்பரகம் சுச்சிப்யः ஹிருதேன சத்யமிருத சாப ஆகஞ்சு ஜன்மான சுச்சயः பாவகாः. ஓம் ஷன்னோ நிதத்தாம் தபசோ ஜிஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாகாம். ஓம் சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி. சேஷாய நமः இதமாசனம். சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி ஆத்மனியம் சமர்ப்பயாமி புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி. சேஷாய நமः குரோபஹாரம் நிவேதயாமி பானீயம் சமர்ப்பயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி. சேஷாய நமः சர்வோபகாரான் சமர்ப்பயாமி. சுப்ரீதः சுப்ரசன்னः வரதா பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ அவிவேதாமஸ்வினா भग स्वस्ति देव्यतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुप्रवामहे सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तके देवा अवन्तु भवस्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अतिथे कृधी स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्तदताग्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्स्व बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अंहो मुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगं शोभम्. பக்தர்களே, ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் அந்த நாராயண நாமத்தின் மேன்மையை நமக்கெல்லாம் விளக்கி இருக்கிறார்கள். பெரியாழ்வார் நான் முன்பு சொன்னது போல நம்மையெல்லாம் நாராயணனுக்கு பல்லாண்டு பாட சொல்கிறார். அது மட்டுமல்ல,
அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை தான் எம்பெருமான் ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு கல்வனாக திரிந்த பரகாலரின் காதுகளில் ஓதி அவரை திருமங்கை ஆழ்வாராக்கினார் என்றால் அந்த திருமங்கை ஆழ்வாரின் பாக்கியத்தை தான் நாம் எண்ணி பார்ப்போம். இந்த திருமந்திரத்தை பகவான் பத்ரிகாசிரமத்தில் நரனுக்கும் விஷ்ணுலோகத்தில் பெரிய பிராட்டிக்கும் இறுதியாக சரமஸ்லோகத்தை குருச்சேத்திரத்தில் அர்ஜுனனுக்கும் உபதேசித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. பக்தர்களாகிய நாம் எல்லோரும் இந்த பூலோகத்தில் பிறவி எடுத்து நோயும் முதுமையும் கவலையும் துக்கமும் சேர்ந்து இந்த சம்சார பந்தத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? நம்மையெல்லாம் இந்த கஷ்டங்களில் இருந்து மீட்கவே பகவான் நமக்கு தரும் உபாயமாகவே இந்த திருமலையில் வந்து நின்று கொண்டு தனது வலது திருக்கரத்தால் தனது திருவடிகளை காட்டி நம்மையெல்லாம் அவரிடம் வந்து சரணமடைய சொல்கிறார். அன்று தேர்க்கட்டலில் நின்று கொண்டு அர்ஜுனனுக்கு உபதேசித்ததை போல சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சக. பக்தர்களே, கவலை வேண்டாம். உங்கள் எல்லா சுமைகளையும் என்மேல் சுமத்திவிட்டு என் பாதங்களை பணிந்து கவலையற்றவராக இருங்கள் என்கிறார் எம்பெருமான். அவரது இந்த சங்கல்பத்தை, இந்த வாக்குறுதியை நினைவுபடுத்தவே நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவரான அந்த ஆதிசேஷனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி இதோ இப்போது அவருக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அந்த நாராயண நாமத்தின் பெருமையை தான் எத்தனை சொல்வது. சங்கீத்தல நாராயண சப்தமாத்திரம் விமுக்த துக்கா சுகினோ பவந்து என்கிறது ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம். அந்த நாராயண மந்திரமே அஷ்டாத்திர மந்திரம். துவயம் மந்திரத்தில் கூட நாராயண மந்திரத்தை தானே சொல்கிறோம். ஸ்ரீமன் நாராயண சரணோ சரணம் பர்வத்தே ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமக. இதுவே துவயமந்திரம். ஆகவே இப்போது ஓம் நமோ நாராயணாய என்று மனதில் துதித்துக் கொண்டே இந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நாம் தரிசிப்போம். அதுவும் எம்பெருமானின் அந்த திவ்ய ஸ்வரூபமான அழகு நமக்கெல்லாம் தெரிந்ததுதானே. லீலா மானுஷ விக்கிரகம் என்பார்கள் எம்பெருமானை. கஞ்சன் கருக்கொண்டு நின்மேல் கருநிற செம்மயிர் பேயை வஞ்சிப்பதற்கு விடுத்தான் என்பதோர் வார்த்தையும் உண்டு. மஞ்சு தவள் மணிமாட மதில் திரு வெள்ளரை நின்றாய் அஞ்சுவன் நீ அங்கு நிற்க அழகனே காப்பிடவாராய் என்று பெரியாழ்வார் பாசுரமிட்டபடி இப்போது எம்பெருமானுக்கு ரட்சையை சமர்ப்பித்துவிட்டு எம்பெருமானுக்கு பட்டமகிழ்ச்சியாக போகும் அந்த பிராட்டிமார்களிடம் வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாம் எம்பெருமானுக்கு செய்கின்ற எல்லா உபச்சாரங்களையும் பிராட்டிமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? ஆகவேதான் இதோ இப்போது பிராட்டிமார்கள். முதலில் பெரிய பிராட்டியான ஸ்ரீதேவி தாயார். திருமால் என்கிற சொல்லில் முதலில் இருக்கும் அந்த திரு என்கிற சொல் ஸ்ரீதேவி தாயாரைத்தானே குறிக்கிறது. தாய்மையும் கருணையும் வடிவெடுத்தது போல் இருக்கும் தயாதேவி அவள். எம்பெருமானுக்கு புருஷகாரமாக விளங்கி அவரது வட்சஸ்தலத்தில் நீங்காத இடம் பெற்றவள். அகலகில்லே நிறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உரை பார்பா என்றார் அல்லவா நம்மாழ்வார். அதே போல முதலில் அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாருக்கு இதோ அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்துவிட்டு அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை எம்பெருமானின் சார்பாக இதோ இப்போது ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இதோ சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த நாராயணனை, அந்த கோவிந்தனை நாம் சரணமடைவோம். ஓம் நமோ நாராயணா என்று நமது மனசிலே சொல்லிக் கொள்வோம். அடுத்து அருகில் இருப்பவளோ பூமி பிராட்டி, பொறுமையின் பூஷணம். அதுவும் எப்படி சமாதேவி. குழந்தைகளாகிய அந்த நம்முடைய பக்தர்களாக நம்முடைய குற்றங்களை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டு எம்பெருமானிடம் நமக்காக சிபார்சு செய்யும் கருணாமயி பூமிதேவி தாயார். அந்த தாயாருக்கும் இதோ இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை எம்பெருமானின் சார்பாக இதோ சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்வேத வராக மகிஷி என்று அவளை போற்றுகிறார் சுவாமி தேசிகன். அந்த ஸ்வேத வராக மகிஷியை முன்னிட்டு கொண்டு நாமும் அவளது மணாளனான அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனான கோவிந்தனை சரணமடைவோம். அடுத்து இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை இதோ இப்போது நமக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கும்
அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான பங்கமோ லோபங்களோ வராமல் இருக்க இன்னொரு சுவாமி அவரது கரத்திலும் அந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார். கிரியா லோபம், திரவிய லோபம், ஸ்ரத்தா லோபம், பக்தி லோபம் என்று எந்தவிதமான மந்திர லோபம், அதுதான் எல்லாவிட முக்கியம். எந்த லோபங்களும் வராமல் இருக்க இந்த மந்திரித்த ரட்சை அவருக்கு எல்லா விதத்திலும் ரட்சையாக இருக்கும் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. அடுத்து நடைபெறும் நிகழ்வு அக்னி பிரதிஷ்டை. அதைத் தொடர்ந்தாற்போல ஹோம காரியங்கள். நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் எல்லாவித நன்மையான காரியங்களும் அக்னியை முன்னிட்டு நடைபெறுவதுதானே येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भुवनस्य रेतयः सञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निवश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीगर्भार्जनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आगिप्रजागं मृगमस्मासुधे कचस्रोदीदिहिनो दुरोने अग्न आगाहि वेतके कृणानो हव्यदातके निहोता तस्य बर्हिषि कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवां तत्सवितर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धिगो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्टात् सुतश्च यो निवसतस्य विवह ओं ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुगुं सोमो अरवन्तमाशगुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणीयो ददातु तस्मै ओं सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाग्नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नाकस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानञ्चदेः ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसविदप्रहरेम वीतके आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णां दशन्त्वास्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतवतीच्चैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणिपात्रिकोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देः ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देव गच्छागि दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे विष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेक्नमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आज्यपात्रे प्रजापतये दुष्टनिर्वपामि इन्द्राय दुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो दुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामि अपमुपस्पृश्याम् ॐ श्री विष्णवे दुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामि आज्यं दृप्यदिष्टगामि चलं दृप्यदिष्टगामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्पति स्वापना त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा
वाक्पतिस्वापनात्मच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा च पितापनात्मच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञां चरुभिः इन्द्राग्रमः अग्नगे नमः यमाग्रमः निरुतगे नमः वरुणाग्रमः वागवे नमः कुबेराग्रमः ईशाराग्रमः अग्नगे नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जराप्रभवे नमः वैश्वानराग्रमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाग्रमः दितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्वतेऽर्थवर्धगतास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपमुपस्पृश्यां ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवाम् ओं अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामविस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोचाक्रवागं सस्वमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः సతి నీకు నమరే అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే మెలుపున ఆనలు మీరక చలములనూరక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక
పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే చూపక పంతానయే పక మొగితప్పులు కడుమోపక పగటులు చూపక పంతానయే పక మొగితప్పులు కడుమోపక అగడు చేసి వెడయాసలు రేపక నిగిడి రతి గలయు నెలతవో జాడ భాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యలోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలయతే లవనేక్షుసురాసర్పిరదధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్యాం సప్తార్నవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్యాం సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్యాం సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృతభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణగ కురువర్షాఖ్యాం నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాజపేయాం పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకే నందక శారంగాది పంచాగతధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రికారశేఖ ప్రవరాన్వితాం
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यां पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्यां परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्यां श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूल प्रकृति स्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्यां श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायां आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यां समस्त देवतां निकुटमकुटमनिगन विजृंभित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्यां श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायां आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योदिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुड वाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनों अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणीत्वमत्रगारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु திருக்கல்யாணத்தில் தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கின்ற அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மஞ்சள் குங்குமம் அர்ப்பித்து புஷ்பங்களால் அலங்காரம் செய்வார் நமது அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல இந்த மங்கள வேளையில் சில நல்ல விஷயங்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். பிரியவாக்கிய பிரதானேன சர்வே துஷ்யந்தி ஜந்தவகா. இனிமையான சொற்களை பேசினால் மிருகங்களுக்கு கூட மகிழ்ச்சி உண்டாகுமாம். ஆகவே நாம் இனிமையாக பேச வேண்டும். அதிலும் இன்னொருவருக்கு வேதனை தராதபடி பேச வேண்டும். இனிய வார்த்தைகளுக்கா பஞ்சம். நாம் பேசும் நாக்கில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி வீட்டிருக்கிறாளாம். ஆகவேதான் கடுமையாக பிறரை தாக்கும் வகையில் பேசினால் அந்த இல்லத்திலிருந்து மகாலட்சுமி அகன்று விடுவாளாம். ஆகவே அனைவரிடமும் அன்பை வளர்த்து கொள்வதே நல்லது. நாம் பேசுகின்ற அத்தனை சொற்களுக்கும் வலிமை உண்டு என்பார்கள் பெரியோர்கள். ஆகவேதான் பேசும்போது யோசித்து பேச வேண்டும். அமங்கலமான சொற்களை பேசக்கூடாது. வார்த்தைகளின் வலிமைக்கு ஒரு உதாரணம்
சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு பண்டிதர் ஒரு கிராமத்தின் கோவில் மண்டபத்தில் அமர்ந்து உபன்யாசம் செய்து கொண்டிருந்தாராம். உபன்யாசத்தின் முடிவில் ஒரு பெண் அவரிடம் வந்து, தனது குழந்தைக்கு உடல் நலம் இல்லை, உங்கள் ஆசீர்வாதத்தால் குழந்தை குணமடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாளாம். அவரும் மறுநாள் அந்த குழந்தையை தன்னிடம் காலையில் அழைத்து வரும்படி சொன்னாராம். மறுநாள் காலையில் அவளும் அந்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு அவரிடம் போனாள். அவர் அந்த குழந்தையின் தலையில் கையை வைத்து ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே கண்களை மூடி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தாராம். அப்போது கூட வந்த அவளது கணவன், எத்தனையோ மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து குணமாகாத நமது குழந்தை இவருடைய பிரார்த்தனையால் மட்டும் குணமாகி விடுமா என்று மனைவியை பார்த்து கூச்சலிட்டாராம். கூச்சல் என்று சொல்வதை விட திட்டினான் என்று சொல்லலாம். அதற்கு அந்த பண்டிதர், உனக்கு பிரார்த்தனையை பற்றி என்ன தெரியும்? நீ ஒரு அறிவில்லாத முட்டாள், மூடன் என்று அவனை பார்த்து சொன்னாராம். அவனுக்கு வந்ததே கோபம். அங்கிருப்பவர்கள் முன்னிலையில் அவர் தன்னை அவமானப்படுத்தி விட்டதாக நினைத்து கோபத்தில் முகம் சிவங்க கடும் சொற்களால் அவரை காயப்படுத்த வேண்டும் என்ற நினைப்போடு பாய்ந்து அவரது அருகில் போனானாம். அவனது ஆவேசத்தை கண்ட அந்த பண்டிதர் புன்னகையோடு, அப்பனே, நான் இப்போது சொன்ன வார்த்தைகள் உன்னை இவ்வளவு கோபம் பட வைக்க முடியும் என்றால் ஏன் நான் கூறும் நல்ல வார்த்தைகளும் பிரார்த்தனைகளும் உன் குழந்தையை குணப்படுத்தாது என்று நினைக்கிறாய் என்று சாந்தமாக கேட்டதும் அப்போதுதான் அவனுக்கு அந்த வார்த்தைகளின் வலிமை புரிந்ததாம். அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டதோடு தானே தன் குழந்தையை எடுத்து அந்த பண்டிதரின் மடியில் கிடத்தினாராம். பக்தர்களே, இதில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நீதி என்ன? நாம் நல்லதை பேசினால் நிச்சயமாக நல்லதே நடக்கும். நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் வலிமை உண்டு. நமது நாக்கில் சரஸ்வதி தேவியும் வாக்கில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியும் வீற்றிருக்கிறாளாம். ஆகவேதான் மங்களகரமான வார்த்தைகளை பேசும் இல்லங்களிலிருந்து மகாலட்சுமி அகலமாட்டாளாம். ஆகவேதான் குலசேகர ஆழ்வார் தான் அருளிய அந்த முகுந்த மாலையில் இவ்வாறு கூறுகிறார்: வாராய் நாக்கே கேசவனை சோஸ்திரம் செய், காதுகளே நம்மை நழுவ விடாதவனாக கண்ணனின் கதைகளை கேளுங்கள், கண்களே கண்ணனை கண்டு அனுபவியுங்கள், கால்களே எம்பெருமான் திருக்கோவிலுக்கு செல்லுங்கள், தலையே எம்பெருமானை வணங்கு, நெஞ்சே முராசுரனை கொன்ற கண்ணனை தியானம் செய். இப்படி நமது ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் சொல்லி அனைத்தையும் எம்பெருமானுக்கே அர்ப்பணம் செய்ய சொல்கிறார். இதில் அவர் முதல் வரியிலேயே அழைத்தது நாக்கைதானே. அந்த நாக்கு நல்லவைகளை பேசினால் மற்றவை அனைத்தும் தானாக வந்துவிடும். பக்தர்களே, எம்பெருமானின் இந்த திருமாங்கல்ய பூஜை சமயத்தில் நாமும் இந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இனிமையான வார்த்தைகளையே பேசுவோம், இன்னொருவர் முன்படும்படி பேசவே மாட்டோம் என்கிற அந்த உறுதியை இந்த மாங்கல்ய பூஜை சமயத்தில் பக்தர்களாகிய நாம் எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதோ இப்போது திருமாங்கல்ய தாரணம் மந்திரங்களை சொல்லி திருமாங்கல்ய தாரணம் செய்ய அதோ தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் இந்த திவ்யமான நிகழ்வை கண்குளிர தரிசிப்போம், காது குளிர மந்திரங்கள் அனைத்தையும் கேட்போம். முதலில் எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தரத்தில் அகலாது வீட்டிற்கும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாருக்கு திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி இதோ இப்போது எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த திருமாங்கல்யத்தை இப்போது சமர்ப்பிக்கப் போகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த மகாலட்சுமி தாயாரை மனதிலே தியானித்துக் கொள்வோம். அந்த மகாலட்சுமி தாயார் தானே நமது வாக்கில் குடியிருக்கிறவள். ஆகவே அவளை மனதிலே தியானித்துக் கொள்வோம். அடுத்து அதே திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி அவளது அருகிலே வீட்டிருக்கும் அந்த பூமி தேவி தாயாருக்கும் இதோ இப்போது திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க தயாராகி இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த பூமி தேவி தாயாரையும் மனதிலே இருத்திக் கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை நாம் சரணமடையலாம். நாராயணா நாராயணா என்றும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும் அந்த எம்பெருமானை எத்தகைய நாமங்களை சொல்லி அழைத்தாலும் பகவான் நாம் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வருவார் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஆகவே பக்தர்களே, எம்பெருமானின் இந்த திருக்கல்யாணம் भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु चूची चूची
अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवाम् ॐ अग्निरेतु प्रथमो देवतानाकुंसोऽस्य प्रजां चतुमुच्च पाशात् तदयगं राजा वरुणो न मन्यता यथे जग्स्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजां चतुमुच्च पाशात् तदयगं राजा वरुणो न मन्यता यथे जग्स्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजामस्कीनगतु दीर्घमायुः अशोऽन्योऽवस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रपद्यताम् नियग्निस्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोतं च स्वाहा आकोतिश्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दरसश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसमितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामीन् समृद्धिकरणान् ममां तुभ्यन्त संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामीन् समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामीन् समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा भोगं सव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतां सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसमितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरभिचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभि स्वाहा इदं विष्णुरभिचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुरकोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो वृतानि पस्पशे इन्द्रस्य गच्छः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातदग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सव स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसमितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीर्जं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ठत्स्विष्टकृत्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा
अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्त्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसिते जोसिते जोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगोनीराप्रणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदर्भुक्तग स्वाहा द्योर्भुक्तग स्वाहा पृथिवीभुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदर्जीर्णग स्वाहा द्योर्जीर्णग स्वाहा पृथिवीजीर्णग स्वाहा ओम ऋतधान विद्वानरष्टभृतेनां पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्त्रुपितो वेदस्त्रुपितो द्यौस्त्रुपितो पृथिवीस्त्रुपितो ब्रह्मात्यास्त्रुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसमितप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः यथास्कमिधास्थानं प्रवेशयामि अक्षतमक्षत्ये जहोमि अक्षतमसमामे एक्ष्येष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगां उत्तरतः परधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषदगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेनग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगागुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगागुषं यत्देवानां प्रगागुषं तन्मे अस्तु त्रगागुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रगागुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महीर्णागिचक्षुषे यो वश्यवदमोरसस्तस्य भाजगदेहनः वृषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगशिक्षगा गजन्वथाम् आपो जनगथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुतन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रपात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनःपात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. வந்தது காரணமாக என் சங்கிழுக்கும் வழக்குண்டே புன்னை குறுக்கத்தின் யாழல் செருந்தி பொதுப்பினில் வாழும் குயிலே பன்னி எப்போதும் இருந்து விரைந்து என் பவளவாயன் வர கூவுவாய் என்று ஏங்கினாள் ஆண்டாள். மேகங்கள், கார்கோடல் பூக்கள், கண்ணனின் இதழமுதை பருகும் வெண்சங்கு என்று அவள் தூது விட்டது எத்தனையோ, அதில் இந்த குயில் வீடு தூதும் ஒன்று. அந்த எம்பெருமானையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களை இதோ இப்போது இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் சரங்கின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, அடுத்து இப்போது நாம் தரிசிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற மாலை மாற்றும் சடங்கு. மாலை என்றதுமே நமக்கு முதலில் நினைவுக்கு வருவது நமது திருவேங்கடமுடையானுக்கு காலையும் மாலையும் நடக்கும் தோமாலை சேவைதானே. எத்தனை மாலைகள்! சிரசிலிருந்து திருப்பாதம் வரை தொங்கும் மாலை, சங்கு சக்கரத்தை அலங்கரிக்கும் மாலை, திருமார்பு நாச்சியார்களுக்கு அலங்கரிக்கப்படும் மாலை, கட்டாரி மாலை, திருப்பாதங்களை அலங்கரிக்கும் மாலை என புஷ்பக்காடே எம்பெருமானின் மீது சாத்தப்பட்டிருக்கும். ஆனால் இந்த மாலா பரிவர்த்தனம் விசேஷமானது. ஏனெனில் இது மூர்த்த மாலை. எம்பெருமானின் திருத்தோள்களை தழுவியதோடு நிற்காமல் தாயார்களின் தோள்களையும் அலங்கரித்துவிட்டு திரும்பவும் பகவானிடமே வந்து சேர்கிறது. ஆகவே இதற்கு மகிமை இன்னும் அதிகம் அல்லவா? நறுமணமும் அதிகம். ஏன் தெரியுமா? எம்பெருமானின் திருமேனி ஹரிச்சந்திர மனம், தேவிகளின் திருமேனியோ சுகந்த நறுமணம். இந்த இரண்டும் சேர்ந்து அந்த மாலை அனுபவிக்க அது எத்தனை புண்ணியம் செய்தது பாருங்கள். பக்தர்களே, நாமும் இந்த மாலா கைங்கரியத்தை பார்க்கும் அந்த புண்ணியத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலம் பெற்றோம் அல்லவா? இனி அடுத்து நடைபெறுவது தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானின் அருகில் கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு. ஸ்ரீதேவி தாயாரையும் பூமி தேவி தாயாரையும் எம்பெருமானுக்கு வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது நாம் பெற உள்ளோம். இதற்காகத்தானே இத்தனை நேரம் நாம் காத்திருந்தோம். அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் தலம்புராலு என்கிற அட்சதாரோப்பண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் திருமுடியிலும் தாயார்களின் சிரசிலும் சேர்க்க உள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து கற்பூர மங்கள ஹாரதியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். பக்தர்களே, తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పేరు కల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పేరు కల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు
నెరబిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు నెరబిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ